Hello friends, so in the last lecture we discussed about the growth models, the exponential growth and the logistic growth, and there are two equations. Okay, and you can discuss the changes of population growth with the help of that equations. Okay, so now the population are developed by reproduction, obviously sir. Okay sir, population कोई भी population है, they increase by reproduction, and as Darwin says कि when the natural resources and the abiotic and biotic factors are comfortable for that particular individual or for that particular animals, they are able to survive in that particular habitat and they are fit, then they are naturally selected. Okay, they are fittest animal, so they can reproduce more and they increase the number of individuals, so the R value is high according to the Darwin. Okay, but when you discussed about the reproduction rate of different animals, there are so many lots of varieties. So here we discussed about the life cycle of variation. Okay, so the different animals have a different variable life cycles, because the reproduction rate is different. Okay, in the different animals the reproduction rate is different. For an example, कि some animals or some plants reproduce only one time throughout their life cycle or throughout their lifespan. Okay, so they reproduce only a single time, like the bambusa bamboo and the Pacific salmon. There is a two example, one example of plant and another one is fish. Okay, the salmon, Pacific salmon, you know the Pacific Ocean is the largest ocean of world. So Pacific Ocean or Pacific salmon, which is the fish, and they reproduce only a single time throughout the life. Okay, but when this type of reproduction, you can when you observe this type of reproduction, the number of offspring which they laid egg or which they produce a number of offspring, they are more in number or they are large in number. Okay, so Pacific salmon is they reproduce almost 1600 of egg, maybe I don't know the actual number, but almost near to 16 crore, sorry, my mistake is 16 crore egg when they laid egg. Okay, so एक ही बार रखती है, but there are numbers of egg. Okay, now the bambusa bamboo, it is the also example of plant which reproduce only a single time. Okay, now there are so many plants, those are seasonal plants, they reproduce so many times during the seasons. Okay, and some plants they reproduce only a single time throughout the year. Okay, so there are different reproduction rate of different animals, like different plants, and same as different animals. So some animals, some lower animals, or like pink tada means oysters and some insects, so they reproduce so many times, but they their offspring are small in size and large in number. Okay, but like mammals and aves, they reproduce less number of individuals, but they are larger in size. According to size, the mammals and aves, they reproduce or they produce new offspring, larger size and small number. Okay, so these are the varieties of different life cycle, the different animals having the different life stories or life histories. Okay, now according to Darwin or so many ecologists says that this is the major research aspect or research area, or rather major to nahi, but it is the interesting area of research is life history variation. When you see the variation of animal, when you see the varieties of animals or diversity of different animals, so they also diverse according to the reproduction rate. So how that animals are surviving in the same habitat, the number of animals are different, the species are different, so how both the species are surviving in a same habitat, what about the reproduction rate of different animals which are interact with each other, that is an interesting area.
bacteria. Okay, but now we are not discussing on them, but we move further for our next topic, and the next topic is population interaction. Now this is the very interesting टॉपिक एंड अभी इसमें आपको मजा आने वाला है बिकॉज देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स आर इजी, दैट्स वाई you are able to understand the topic because it is so easy. So population interaction, and now you know कि we all survive in a society, or we all surviving in a specific areas. So and obviously we are surviving in our comfortable zone, but still कि we are surviving in a कोई सोसाइटी है या कोई हैबिटाट है. फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई, तो यू ऑलवेज इंटरेक्ट विथ योर नेबर्स. ऑब्वियसली सर कि वी कांट सर्वाइव अलोन. ओके, अगर हम अकेले रहेंगे तो पागल हो जाएंगे ऑब्वियसली. सो वी कांट सर्वाइव अलोन. We need or we required any partner or any other people or organisms or any animals. अगर आप कोई नहीं है तो आप पेट रख सकते हैं. So you have a interaction with other animals, okay, or plants, whatever it is कि either plant है या animals है, but you always have an interaction. Okay, so any organisms, the organisms which survive in any habitat, for an example, if we take an example of forest, okay, just see the forest, there are numbers of plant, angiosperms, gymnosperms, there are numbers of animals, number of species are survive, like elephant, lion, deer. Then plant species are different. So both the animals and plants, so animals and plant animals, they are interact with each other through a different interactions. Okay, there are so many interaction. Okay, and with the help of this interaction they interact with each other. So some interactions are harmful, some interactions are beneficial for both the species. So there are 6 interaction which you will learn into your textbook. So there are 6 interactions. Okay, so we checked one by one. Okay, the first one is mutualism. Mutualism is the first interaction. So mutualism, the name itself says कि this interaction is beneficial for both the species. This interaction is beneficial for both the species. When one species is surviving with another, so one species gain some benefits, or they get some benefits from one, and second one is get benefits from first one. Okay, and the major examples, मैं आपको example देता हूँ. The first example is the leguminous plants. The root nodules of leguminous plants, there are the rhizobium bacteria, they are surviving in the root nodule of leguminous plants. So they fix the nitrogen, and you had already studied this, they fix the nitrogen into the root. Okay, and what about the bacteria? So bacteria get the habitat, bacteria get the food from plant, and plant get the nitrogen from soil, or from the atmosphere, rather, not soil, from the atmosphere. So this interactions are beneficial for both the species. If we write species 1, rather species A and species B, so what about the mutualism? So both the species are beneficial by this interaction. So you can say this is the mutualism is the beneficial interaction. And the another example is some bacteria which are surviving in our colon, which are in our intestine. So we get the vitamins, or they synthesize the vitamins. They are helpful in the digestion of cellulose. So we are beneficial from bacteria. And what about the bacteria? Bacteria get the habitat, bacteria get the food from our body. Okay, so both this interaction is beneficial for both the species. Now the third example, which is the important and basic example, and you had already aware with this example, is lichen. So you know the lichen structure. There is a phycobiont, there is a mycobiont, there is a algal part and fungal part. Both the parts are present in lichen. So algae क्या करती है? They synthesize the food in the presence of sunlight, and they give the food to the fungi. And what about the fungi? So fungi absorb the atmosphere moist, and they give the
lichen. So algae. So both are surviving in a same both are surviving in the same places, and both are beneficial for each other. Okay, so lichen is another example of mutualism. Clear? So mutualism is easy. Now I'm already give you the 3 example. Okay, in the future you will understand about the another examples. It is easy. So now the competition. So what about competition? The competition means ki interaction between 2 species, but you know this competition word is very tough, and nowadays it is very tough. Each and every person now in human being, अगर हमारी बात करें तो we are surviving in competition era, rather कंपटीशन एरा के अंदर हम सर्वाइव कर रहे हैं कि जहाँ पे एक एनिमल दूसरे एनिमल या फिर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को कॉम्पीट करता है. ओके, लिसन केयरफुली कि जब जब कंपटीशन की बात आती है, व्हेन एवर यू डिस्कस्ड अबाउट कंपटीशन, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ बोथ द स्पीसीज. Now we talk about a simple example of lion कि 2 lions are fighting, rather 2 lions are fighting with each other, and for the habitat, just a simple for the habitat. So any competition, the one जो कोई एक होगा वो जीतेगा, he will win, and the another one is वो ऑब्वियसली वो हार जाएगा, he will lose. समटाइम्स वो मर भी सकता है. ओके, ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन. बट एक जीतेगा या दूसरा हारेगा, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है. बात है उसके बेनिफिट की या लॉस की. सो जीतेगा उसका लॉस है ऐसा ज़रूरी नहीं है. दे आर डैमेज्ड. ओके, दे आर डैमेज्ड फिजिकली. समटाइम्स कोई लायन है उसकी आंख चली जाती है, उसको वुंड ऐसा हो जाता है, ब्लीडिंग आ रहा है. सो द लॉस ऑफ बोथ द स्पीसीज, वहाँ पे क्या है, दोनों स्पीसीज का लॉस है. सो वी कैन से ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन बोथ द स्पीसीज उनका जो लॉस होगा वो ज़्यादा होगा. सो ये इंटरेक्शन है वो लॉस करती है दोनों स्पीसीज को. नाउ बट दिस interaction is important. This interaction is important for ecosystem. Ecosystem के लिए interaction important है. Now predation, it is the most important because we will discuss today about the predation. Now during the in the predation interaction there are 2 different terms. एक है prey, which you know, and the second one is predator. So prey and predator relationship, it is known as predation. So you can say कि sir prey predator relationship is known as predation. Okay, prey predation relationship is known as predation. Are you clear? Now so एक जो होगा वो prey होगा obviously, and second one is predation. So जब prey predation आपके मन में आता है तो मुझे एक ही एग्जांपल याद आता है, the lion and the deer. Sorry, lion and deer. Okay, so lion is a predator and deer is a prey. So when you talk about the insect or the grasshopper and grass, so grass is a prey, grasshopper is a predator. So prey predator relationship is most important for food chain, for energy transfer. That's why it is important. Okay, so this is the important. But what about कि sir during the predation what happened with the both the species? So obviously sir prey है वो हमेशा हारता है या फिर वो खुद एक खाना है, सो वो मर जाएगा. ओके, ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन सो वन जो एक स्पीसीज है उसका लॉस है और दूसरी स्पीसीज को खाना मिलता है. दे गेट फूड फ्रॉम द प्रे, दैट्स व्हाई दे आर बेनिफिशियल. ओके, सो ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन one species is beneficial, the another species, one species going to lose their life, and the second one is second one है वो है important किसके लिए, वो दूसरा जो है वो important है,
वीन हो जाएगा या फिर खाना मिलेगा उसको। नाउ द नेक्स्ट वन इज पैरासाइटिज्म। ओके, नाउ यू नो द पैरासाइट्स, they surviving in the host body. Okay, so एक पैरासाइट होता है, दूसरा होस्ट होता है in the parasitism. So parasitism is the another example of interaction, and this interaction is harmful for one and the beneficial for other. Okay, other means parasite जो है वो उसके लिए benefit है because they surviving in humans body. For an example, the simple example is plasmodium. ओके, प्लाज्मोडियम से क्या होता है? द मलेरिया. ओके, सो प्लाज्मोडियम्स आर एंडोपैरासाइट्स, सो दे आर सर्वाइविंग इन ह्यूमंस. सो व्हाट दे गेट द फूड, दे गेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर स्पीसीज. एंड व्हाट अबाउट दी ये जो उनका क्या होगा ह्यूमंस का, तो उनको मलेरिया होगा, वो मर भी सकते हैं. सो उनका लॉस है. सो एक को जो होगा वो बेनिफिट होगा और दूसरे का लॉस होगा. एक जो होगा वो बेनिफिट्स मिलेगा और दूसरा है उसका लॉस होगा. क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं विद द कॉमेंसलिज्म. नाउ दिस टू इंटरेक्शंस आर यूनिक इंटरेक्शन एज माय पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाई आई एम सेइंग, आई विल टेल यू कि कॉमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म, okay, Emensalism and Commensalism are unique because interaction between the two spaces, उनमें से out of the one spaces they get nothing, not lose, not win, nothing. They don't lose anything, they don't get anything, they are neutral. But in the Commensalism, अगर Commensalism की बात करें तो एक न्यूट्रल है जिसको कोई फायदा या नुकसान नहीं है, बट द सेकेंड वन दे गेट द बेनिफिट. एंड द एग्जाम्पल इज, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको पता चलेगा. देयर इज शार्क फिश. ओके, शार्क होती है, शार्क आर कार्निवोरस फिश. नाउ देयर इज अनदर फिश इज सोल फिश. सोल फिश जो है दे बाइंड विद, दे अटैच विद दिस शार्क फ्रॉम द लोअर साइड. बेली साइड जो शार्क होती है, शार्क की बेली साइड से, वो डोर्सल साइड जो उसकी होती है सोल फिश की, दे बाइंड विथ ईच अदर, दे अटैच विथ ईच अदर. एंड नाउ व्हाट अबाउट शार्क? नथिंग. शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइदर सोल फिश इज अटैच्ड विथ हिम और नॉट. ओके, सो शार्क मूव एज दे वांट. Okay, they travel as they want, so they take a food. Okay, now soulfish अगर उसके साथ है तो soulfish को भी घूमने मिलेगा. सेकेंड थिंग, खाना जो शार्क खाती है उससे जो बच जाता है वो नीचे से क्या खा लेगी? soulfish खा लेगी. Okay, so soulfish is beneficial with this reinteraction, but शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर? शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज द यूनिक इंटरेक्शन कि जिसके अंदर एक को बेनिफिट है, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि व्हाट द अनदर वन इज गेट और नथिंग. ओके, नाउ एमेंसालिज्म, ये इससे भी यूनिक है क्योंकि एक को कोई फायदा या नुकसान नहीं है एक स्पीसीज को, लेकिन वो दूसरी स्पीसीज को डैमेज करेगी. Okay, there are so many examples of bacteria and paramecium, rather they are surviving in colony. So some paramecium secrete some chemicals. So this chemical, so जिसने secrete किया है उस paramecium को कुछ नहीं होता. Okay, they get nothing, but the another species will die due to the toxic effect of that chemicals. So Emensalism के अंदर क्या होता है? एक को फायदा या नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन वो दूसरों का नुकसान करता है. क्लियर? एक स्पीसीज है वो न्यूट्रल है, उसको कोई बेनिफिशियल लॉस नहीं है, लेकिन वो दूसरे स्पीसीज को मार देती है या फिर डैमेज करती है, वॉट एवर. सो दीज आर दी इंटरेक्शन ऑफ एनिमल्स और इंटरेक्शन ऑफ प्लांट और इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स into the habitat or different habitats. Okay, and I gave you the different examples, okay, of different interaction. Now we move to major interaction, rather सभी major interaction है, हमें एक के बाद सब देखनी है, but we start the predation. Predation के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि there is a prey and predator relationship. Now prey and predator relationships are unique.
Why? Because it maintain the ecosystem, it maintain the habitat, it maintain the nature. How? You know कि what plants function is. Plant do the photosynthesis in the presence of sunlight, so they transform the solar energy into the chemical energy, and they store this chemical energy, and then the herbivorous animals, they get the food from plants, so this chemical energy is transferred into the herbivorous, and then carnivorous get the food from herbivorous, so carnivorous get the energy from herbivorous. So here the energy transfer occurs with the help of this interaction, prey-predation relationship or predation. Clear? And same as food chain is also there. So different food layers, or you can say energy layers are there, okay, which only occurs with this relationship or this interaction. So this interaction is important for habitat, or this interaction is important for ecosystem. Okay, now this interaction is most important for this. मैंने ऐसे किया, ऐसे ही. So population control, this is the most important part of this interaction. Population control. How it control population, sir? Just imagine that there is one forest, which is a very green forest. There is a grass and the tall plants. Now I put the 50 deers into that habitat or the forest. Okay, now they increase their population according to Darwin, because there is a number, so many plants are there, grasses are there, so they increase their number because they get food. Obviously, कहाँ तक increase करेंगे? Up to their carrying capacity. As ecologist says कि up to their carrying capacity they increase their population. After that, what happened after that, कि when they arriving at the high level of their numbers, the limitation of food means सब खा जाएंगे वो ग्रास. अगर उनकी नंबर बढ़ गई तो वो सारे ग्रास खा जाएंगे, तो प्लांट स्पेसिस लॉस हो जाएगी. प्लांट स्पेसिस लॉस हो जाएगी. तो हमें क्या करना चाहिए? आई शुड पुट अनदर प्रीडेटर फॉर दैट डियर्स. सो मुझे उस हैबिटेट के उस हैबिटेट के अंदर मुझे एक और एनिमल ऐड करना पड़ेगा जो प्रीडेटर हो फॉर दैट डियर्स. ओके, फॉर एन एग्जांपल आई पुट फॉक्स इनटू दैट हैबिटेट or wild dogs, whatever, but I should put the predator for that prey to control the population of plant. So this is the easy to understand कि sir population control के लिए that is the important. There are so many examples of that. The first example, which is always important, the prickly pear cactus. Prickly pear cactus, which is common in our area also. This example is from Australia. Okay, in 1920, ये आपको याद रह जाएगा बिकॉज एक मूवी आई थी 1920. सो 1920 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में ये फॉरेन स्पीसीज थी, इसको एंटर किया गया फॉर व्हाट द एम्स आर आई डोंट नो, बट दे इंट्रोड्यूस द प्रिकली पेयर कैक्टस. नाउ द रिप्रोडक्शन रेट ऑफ प्रिकली पेयर कैक्टस आर फास्ट, so they grow multiply and they increase their population. Now what happened कि they become dominant into that habitat. They become dominant. So वो क्या करते थे, वो दूसरे plants को survive नहीं करने देते थे. Another plants, another species can't survive into this habitat because they absorb all the things. So अब क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई predator नहीं था. So they introduced the predator like moth. Okay, एक moth insect है.
they introduce the moth into that habitat to control the population of prickly pear cactus. Okay, and this is important. Okay, if we discussed in animals, just example कि जैसे हमने डियर का एग्जाम्पल लिया, ओके, कि एक और बात है कि लीफ या फिर प्लांट तो चले जाएंगे, ग्रास तो खाली हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट डियर्स आफ्टर दी emptiness of grass or after the removal of grass, what about the deers? वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे. जब ग्रास की लिमिटेशन हो जाएगी या उसका रिसोर्सेस है वो कम हो जाएगा तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे. ड्यूरिंग द कंपटीशन कोई मर जाएगा, कोई जिंदा रह जाएगा, वॉट एवर दैट इज, कि जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में, जो डियर की पॉपुलेशन है वो खतरे में आ जाएगी. सो एक बात ये भी है कि प्रीडेटर इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोल ऑफ प्रे पॉपुलेशन ऑल्सो. हाँ, प्रे पॉपुलेशन भी कंट्रोल करता है प्रीडेटर, सिर्फ प्लांट पॉपुलेशन ही कंट्रोल करता है ऐसा नहीं है. द बेस्ट एग्जांपल इज अमेरिकन स्टारफिश, पिसास्टर. सो they take an intertidal zone of America and pisaster or a starfish, that it is a main or chief predator of that area. Intertidal zone की ये जो most important predator थी starfish, pisaster. Now they do the experiment on this starfish. So what they do? So they remove the starfish from intertidal zone. So what happened? So उनके जो prey थे उनके बीच में competition हुआ और जितने भी invertebrates prey उनके थे they will extinct. Sorry. They become extinct into that area. Okay, वो उस एरिया से extinct हो गए because of removal of pisaster or removal of starfish, because it is an important predator. तो वो तो नहीं थे, तो अब उनके जो प्रे थे उनके बीच में कंपटीशन हुआ क्योंकि उनकी नंबर ज़्यादा थी फॉर फूड, फॉर हैबिटाट. सो उनके बीच में कंपटीशन हुआ तो वो पूरी स्पीसीज है वो लॉस हो गई. सो दैट्स वाई प्रीडेशन इज इम्पॉर्टेंट. ओके, हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई एक शिकार करता है, कोई डियर का, कोई लायन है वो डियर का शिकार करता है या वो उसको खा जाता है तो हमें बुरा लगता है कि ये कैसा काम करता है या ऐसे खा जाता है, अच्छा थोड़ा लगता है, अच्छा थोड़ी होता है. बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर नेचर. ओके, नाउ ऐसा नहीं है कि प्रे को खाने ही देना है प्रीडेटर को. प्रे गेट सम मोर बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर. ओके, प्रे को डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रॉम नेचर टू डिफेंड द प्रीडेटर. फॉर एन एग्जाम्पल, देर आर सो मेनी इंसेक्ट्स, दे सीक्रेट सम केमिकल्स, द टॉक्सिक केमिकल्स, जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, ऐसे जो केमिकल्स हैं ऐसा सीक्रेट करते हैं द प्रेज टू इनहिबिट द प्रीडेटर. प्रीडेटर बाहर से देख के या स्मेल लेके उसको अच्छी नहीं लगेगी स्मेल या फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, सो दे लीव दैट इंसेक्ट्स. ओके, सो इंसेक्ट्स या फिर जो भी प्रे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दे गेट बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर कि वो ऐसे ही आए हैं कि दे कैन सीक्रेट द टॉक्सिक और पॉइजनस केमिकल्स, ओके, टू इनहिबिट द प्रीडेटर्स. सेकेंड थिंग कि sometimes they also develop their colors like camouflage. Camouflage is the best example to prevent the predators. Okay, to avoid, to inhibit the over exploitation, कि ज़्यादा खा ना ले जो predators है वो prey को, उसके ये सब benefits हैं जो prey को मिलते हैं. कि कैमोफ्लेज, वो उसकी जो एटमोसफियर है उसके अंदर कैमोफ्लेज हो जाता है, सो उसका कलर है वो मैच नहीं हो पाता. अगर ब्लैक के अंदर कोई ब्लैक चीज़ है तो यू कांट फाइंड दैट. ओके, सो दैट थिंग इज हैपन हियर कि अगर एक एनिमल है वो, फॉर एन एग्जाम्पल, अ ग्रीन ग्रास होपर, यू कांट फाइंड द ग्रीन ग्रास होपर इनटू द ग्रीन लीफ, ऑब्वियसली सर, बिकॉज द ग्रास होपर हैव द कैमोफ्लेज, ओके, टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ. ओके, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कलर प्रोड्यूस करता है जो नेचर ने उसको दिया है जो प्रीडेटर को दूर रखे. ओके,
सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट एनिमल्स को जो प्रीडेटर्स को दूर रखते हैं. व्हाट अबाउट प्लांट्स? बिकॉज यू नो कि ऑल herbivores आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. So plants are the major producers. They are producers also. So how plant inhibits the predators? क्योंकि उनके पास तो हाथ पैर नहीं है, वो भाग नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते, तो प्लांट खुद की रक्षा कैसे करेंगे? So there are so many advantages which nature gives the plant. So the first one is to remove their leaves. प्लांट है वो उसके लीव्स रिमूव कर देते हैं. दे प्रोड्यूसेस स्पाइन्स लाइक एकेशिया, कैक्टस, उनके अंदर लीफ नहीं होते, स्पाइन्स होते हैं. वो उसके दो रीजंस है. एक वो वाटर अवॉइड करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर अवॉइड करते हैं. सेकेंड थिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स. सो प्रीडेटर्स से प्रोटेक्ट या प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करते हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन टू प्रिवेंट फ्रॉम द predators. Second thing, they also secrete some chemicals like animals. ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं भूल गया था कि the animals like इंसेक्ट का मैं जो भी एग्जाम्पल दिया, उस इंसेक्ट के अंदर एक बटरफ्लाई है कलरफुल जिसका नाम है मोनार्क. So monarch butterfly secrete the chemicals, okay, that bad smell, okay, so जो प्रीडेटर्स हैं उससे दूर रहते हैं. ओके, सेम थिंग प्लांट करते हैं. प्लांट ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं, ओके, कि जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा. बट प्लांट्स सिक्रीट सम लैटेक्स, सम केमिकल्स, सम टॉक्सिक और पॉइजनस मटीरियल लाइक plant milk. The example of Calotropis procera. Calotropis procera is a scientific name. So Calotropis क्या करता है? ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है जिससे जो एनिमल्स हैं वो दूर रहें. सो समटाइम्स यू ऑब्जर्व कि कई ऐसे कैटल्स होते हैं, कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट, कोई स्पेसिफिक प्लांट को नहीं खाते बिकॉज ऑफ दिस केमिकल्स. Okay, like nicotine. Nicotine is another example of, okay, they secrete nicotine. They synthesize the nicotine to remove the predators. Predators को दूर रखते हैं. निकोटीन उसकी स्मेल ही ऐसी होती है, वो खाते नहीं है. ओके, बट हम खाते हैं निकोटीन. हम उसका यूज़ कर सकते हैं. सारे एग्जाम्पल ले लो. निकोटीन, कैफीन, क्विनाइन, स्ट्रेनाइन, देन ओपियम. दीज आर द एग्जाम्पल. ओके, कैफीन है, निकोटीन है या फिर ओपियम है, ये सभी है जिससे जो एनिमल्स हैं वो दूर रहते हैं, जो प्लांट खा ना जाए उसके लिए. और हम लोग उसका जो यूज़ करते हैं वो हमने 8th चैप्टर के अंदर देखा है कि क्या क्या हम यूज़ करते हैं. उसके बारे में मैं डिटेल नहीं जा रहा. बट दिस आर दी एडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू रिमूवल ऑफ प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स को दूर करने के लिए, प्रीडेटर्स को रिमूव करने के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए ये इनके एडेप्टेशंस हैं. So this is all about the interaction of predation. So मैंने काफ़ी बोर्ड है वो गंदा किया है, but these are the easy topics and easy to understand the examples जो सभी आपको समझ में आ जाएंगे. So this topic is easy, the examples are easy. So read this from their textbook, okay, and it is easy. So in the next lecture we will take another 2 interaction. कितनी है? 6 है. तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से इंटरेक्शन देखेंगे आगे, और नई 2 इंटरेक्शन या 3 इंटरेक्शन लेंगे जो भी हमें अच्छा लगेगा वो. ओके, सो आज यहाँ तक रखता हूँ. विल मीट इन अनदर वीडियो सेशन.